Okay, hello everyone. Today we have come across JAM 2024 question number 59, right? This is a problem. So here's for all n belongs to n, there's a sequence named as an, and we need to find the limit of this sequence called beta, right? This is the main thing which we need to do. So firstly we write an, right? An is given as 1 upon n to the power n minus 1 summation k is equals to 0 to n. Look, this something is similar to class 11 thing that is called as combination formula like nck. So we write it as nck into n to the power k divided by k plus 1. Now in this question there's one kind of formula which you know, which you should know, right? So the formula is known as binomial sum formula, right? So what is the binomial sum formula? Suppose if we have a plus b whole to the power n, then its expansion can be written in the form of summation. What we write it as k equal to 0 to n nck a to the power n minus k dot b to the power k. This is our expression. Now further, if we put a is equals to 1 and b as x, right? So what we get? We get 1 plus x to the power n as summation k equal to 0 to n nck x to the power k, right? Because 1 to the power n minus k will be vanished, right? So now in this expression, right, we need the denominator term k plus 1, right? We need the denominator term k plus 1. So we try to integrate, right? Integrate both the sides. So after integrating both sides of our expression, what we get? We get 1 plus x to the power n plus 1 upon n plus 1, right? And in the right hand side integration of x to the power k, we get x to the power k plus 1 over k plus 1, right? Now since we obtain the expression, now if we put x as n, if we put x as n in the expression, what we get? We get 1 plus n to the power n plus 1 over n plus 1, right, is equals to summation k equal to 0 to n nck n to the power k plus 1 upon k plus 1. Now if we observe the expression given in the question, it's like this. We have nck over here, we have n to the power k, we have k plus 1. Wait a minute, we have obtained the same expression, but it's n to the power k plus 1 over here. Never mind, we can just break this. इसको हम तोड़ सकते हैं, सिंपल. n की पावर k प्लस 1 कर सकते हैं n की पावर k इंटू n. तो ये जो टर्म है ये तो उससे सिमिलर है, लेकिन एक बाहर भी तो टर्म था भाई साहब. बाहर वाला टर्म क्या था हमारे पास? 1 अपॉन n की पावर n माइनस 1. तो हमने क्या करा? एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर दिया. 1 अपॉन n की पावर n माइनस 1 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. तो अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा आपके पास, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है भाई साहब, बताएंगे जरा? ये तो ए एन ही निकला. ये क्या निकला? ए एन ही निकल आया. अब क्या हुआ? ए एन निकालने का फायदा आ गया. देखिए कैसे. अब हम लिख सकते हैं इसको. अच्छा देखिए, 1 प्लस एन और ये तो सम सेम है, बेसिस सेम है. पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट. तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन की पावर एन, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये तो ए एन हो गया, इंटू एन की पावर एन माइनस 1 क्या हो जाएगा? एन की पावर एन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. तो यहाँ से मेरे पास जो ए एन टर्म आ रहा है, ए एन जो सीक्वेंस डिफाइंड है, वो कुछ और नहीं, 1 प्लस एन डिवाइड बाय एन की पावर एन उर्फ
इसको लिख सकते हैं 1 + 1/n की पावर n। तो अब हमारा काम है, an तो निकल आया, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो मेन बीटा से मतलब है। बीटा तब निकलता जब an निकलता, तो अब बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीधे इसकी लिमिट कर देंगे। तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो बीटा वैल्यू क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an। और an भाई साहब कौन थे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n⁴ n। इसको हम वेल नोन जानते हैं, इस लिमिट की वैल्यू e के बराबर होती है। e इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल नंबर और यू कैन कॉल्ड इट एज आइलर नंबर। सो लॉग बीटा, तो बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, ई आई है। तो लॉग बीटा की वैल्यू हम जानते हैं, लॉग ई इज गिवन बाय 1.00। यहाँ लॉग हमेशा बेस ई लिया आता है इन जैम। सो वी हैव आंसर एज 1.00। So I hope you have enjoyed this. If you like the video, please do like, share, and subscribe. And please write the comment if you have any doubt. So, and if you want me to do any other problem of Jam 2024, you can comment in the comment section.